Good morning, students. Now, today we start the fifth lesson of science, is the adaptation in plants. I hope you complete the last all four lesson and you also studied it. So, today the fifth lesson we start the adaptation in plants. So, in this lesson we will discuss about the adaptation in plant, terrestrial plants and aquatic plants. In last lesson we discussed about the adaptation in animals. Okay, so like that in plant also we have to discuss about the or learn about the adaptation in plants. जैसे हमने एनिमल्स में देखे ना एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, वैसे ही हमें प्लांट्स की एडेप्टेशंस कैसे रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स, उसके टाइप्स कैसे रहते हैं, कौन से रहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. Okay, so see here you observe that there are two pictures, one is the coconut and is the lotus. So can you tell about the similarity between two plants? Can you tell or write the difference between the two plant? क्या difference है? देखो ये जो coconut trees है, that coconut trees grow is near the sea. Okay, and their plant is tall. So in the lotus where is it grow? It grow in a water. Means that both plants are different, grow in a different places. Okay, so जैसे हमने एनिमल्स की स्टडी देखी ना, वैसे हमें प्लांट्स का एडेप्टेशन भी स्टडी करना है. देखो अभी, सो वी कैन नॉट ग्रो ऑल प्लांट इन पॉट्स, सो डिफरेंट प्लांट ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट. देखो हम ऐसे हर एक प्लांट्स तो हम घर में पॉट में नहीं लगा सकते क्योंकि उसका एनवायरनमेंट, उसके लगने वाली क्लाइमेट्स हर जगह डिफरेंट रहते हैं. सो ऐसे कुछ प्लांट्स रहते हैं जो पर्टिकुलर एरियाज में ही हमें दिखते हैं. सो these habitats are a place such as desert, mountain, plain and water. डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स दिखते, माउंटेन्स में दिखते, प्लेन पे दिखते, मीन्स लैंड पे. ओके, इन वाटर ऑल्सो. सो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज. उसकी स्ट्रक्चर्स, उसके शेप, साइज ये भी डिफरेंट रहते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन इन प्लांट इन अ डिफरेंट. सी एडेप्टेशन इन प्लांट. एडेप्टेशंस का मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था. द स्पेशल फीचर्स or the change that allow the plant to live and survive in particular area are called adaptations. जैसे कि एनिमल्स हमने खुद में चेंज करते हैं ना, जैसे कि उस एरियाज में सर्वाइव करने के लिए, लाइव रखने के लिए, वैसे ही प्लांट्स भी एडेप्टेशंस करते, खुद को चेंज करते. ओके, देखो एडेप्टेशन इन प्लांट्स आर अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स, प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्शंस. एडेप्टेशंस प्लांट्स में हैबिटेट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट भी होते, प्रोटेक्शन के लिए भी होते, ओके, रिप्रोडक्शंस के लिए भी होते. बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. उसके हैबिटेट पे उसके कौन से टाइप्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. सो जनरली अकॉर्डिंग टू हैबिटेट द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट. ओके, सो सी टेरेस्ट्रियल प्लांट, जैसे कि हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स स्टडी किया है. ओके, व्हाट डू मीन बाय टेरेस्ट्रियल? दे लिविंग ऑन अ लैंड, दैट कॉल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ओके, सो ओनली वन word is changed. The plant that grow on land are called terrestrial plant. जो plants लैंड पे ग्रो होते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. अभी लोटस को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलेंगे क्या? नहीं, बिकॉज दैट ग्रो इन अ वाटर. So they are found in a plain, mountain, desert, marshes area, forest, grassland and coastal area. Generally इन areas में terrestrial plants से हमें दिखते हैं. देखो plants in a plain. In a plain the climate is neither too cold nor too
hot. The plant that grow in this climate have a lots of branches. So plant shed their leaves in winter. For example, mangoes, gulmohar and banyan trees. Plain means in plain generally the climate is not neither too cold nor the too hot, means ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती है ज़्यादा हॉट भी नहीं रहता है. उस एरियाज के ट्रीज कैसे रहते हैं, उसको ब्रांचेस बहुत रहते हैं. जैसे बनियान ट्रीज है, गुलमोहर, जनरली हमारे एरियाज में पाए जाते हैं. मैंगो ट्रीज, दे हैव अ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड दे शेड देयर लीव्स इन अ विंटर. देखो जैसे विंटर सीजन आता है ना, वैसे उसकी लीव्स खुलते इट्स बिकम फॉल डाउन. Okay, so next is the plants in hill area. Plants in hills area, जैसे कि mountains है, hills area है. So the climate is generally cold in the mountain. Okay, there is a snowfall in many area. बहुत जगह snowfall भी होता है. तो ऐसे जगह पे हर एक प्लांट तो नहीं वहाँ पे सोए होंगे. जो प्लांट उसमें रहते वहाँ पे ग्रोथ होती है, वहाँ पे वो खुद को चेंज कर देते. जैसे कि फर है, जनरली पाइन ट्रीज है, सिडार है. दिस ट्रीज आर ग्रो ऑन माउंटेन. ओके, बिकॉज देयर क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर इट. द कोनिकल शेप ऑफ ट्री अलाउ द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली. देखो जनरली वहाँ पे माउंटेन्स में जो ट्रीज रहते हैं ऐसे कोनिकल शेप्स रहते हैं एंड इज हेल्पफुल टू स्लाइड ऑफ आइस इजीली, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होता है. सो वहाँ से इजीली वो हेल्प करते हैं स्लाइड करने के लिए, इजीली वहाँ से स्लाइड हो जाते हैं. सो कौन कौन से एडेप्टेशंस दिखते हैं उस ट्रीज में. ट्रीज आर जनरली टॉल. ओके, वो टॉल रहते हैं, स्ट्रेट एंड दे हैव अ कोन शेप स्ट्रक्चर. ओके, अ फ्यू ट्रीज हैव अ नीडल लाइक लीव्स. some trees have a needle like leaves. जैसे नीडल्स रहते हैं चुभते हमें, वैसे वहाँ पे ट्रीज उसकी लीव्स रहती है. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर एवरग्रीन. वहाँ के ट्रीज है वो एवरग्रीन रहते हैं, मतलब साल भर वो कभी भी देखो आपको ग्रीन दिखाई देंगे. ओके, सो इट्स अबाउट द प्लांट्स ग्रो इन द माउंटेन रीजन. ओके, मीन्स एवरग्रीन ट्रीज जो रहते हैं ना, डू नॉट शेड देयर लीव्स एट ऑल एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द एयर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लांट्स इन द डेजर्ट्स. प्लांट्स इन डेजर्ट. डेजर्ट मतलब पता है आपको कौन कौन से एरिया डेजर्ट, जैसे कि राजस्थान है. ओके, जो डेजर्ट एरियाज रहते हैं ना वहाँ पे हीट बहुत रहती है, ड्राई एयर, वहाँ पे एयर ड्राई रहती है. सी, डेजर्ट एरिया आर हॉट, ड्राई एंड सैंडी. So plant need to retain water and obtain water from deep inside the soil. देखो plants, the basic need of plants is the water, okay, and minerals. अभी plants को अगर पानी लगेगा, सो वहाँ के जो plants रहते हैं ना उनकी कैपेसिटी रहती है होल्ड करने की वाटर. जैसे कैमल रहता है, एनिमल्स, कैमल एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट एरियाज में. सो कैमल्स हैव अ एबिलिटी टू स्टोर द वाटर, okay, and they use it for all for many days. So like that some plants also store the water and that water from deep inside the soil. Like the cactus, date palm है, prickly pear है, opuntia है, are the plants grow in desert area. देखो उसकी फीचर्स क्या है. अभी देखो adaptation, most plant have a spine instead of leaves. इंस्टेड ऑफ लीव्स उस पर क्या रहते हैं, स्पाइंस रहते हैं. ओके, मीन्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. देखो अभी लीव्स रहते तो लीव्स का क्या रहता है वहाँ पे इवापोरेशन, मीन्स उसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं. ट्रांसपिरेशन थ्रू द वाटर इज लॉस. बट अगर वहाँ पे स्पाइन है तो वहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो कम होगी, ओके, इवापोरेशन प्रोसेस की. So it's a helpful for it. So plants have a green fleshy stems that store the water. उसके stems कैसे रहते हैं, green और fleshy रहते हैं. Okay, थोड़े से broad रहते हैं and they are helpful to make the and store the food. Okay, क्योंकि देखो
लीव्स तो नहीं, वहाँ पे स्पाइन है. सो फिर फूड मेकिंग प्रोसेस is occur through the photosynthesis. Okay, but there is the spine instead of leaves, so the stems are helpful for the making the food. Okay, and the roots of the plants are long and spread out. देखो यहाँ पे दिए पिक्चर आपको कैक्टस की है, ओपनशे की, वहाँ पे देखो कैसे नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिए उन्होंने. सो इट इज़ हेल्पफुल टू दैट प्लांट. देखो सम प्लांट्स आर ग्रो इन अ मार्शियस एरिया. इन मार्शी एरिया मतलब क्या, वहाँ पे सॉइल जो रहती है ना वो क्लेई रहती है. ओके, एंड कवर्ड विथ वाटर, वो वाटर से कवर रहती है. सो दैट्स वाई रूट्स ऑफ द प्लांट डू नॉट गेट एयर, सो द रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल. देखो वहाँ पे जनरली रूट्स कहाँ रहते हैं, अंडर द सॉइल, बट हियर the soil is clay and covered with water, so that roots of the plant do not get air and that grow out of the soil and water. वो opposite direction पे उसकी growth होती है. And these roots are called breathing root. इसको क्या कहते हैं, breathing root. So the trees having the breathing root are called mangrove plants. Is the example of marshes area which mangrove. Okay, mangrove plants have a breathing roots. Okay, see, then plants in a coastal area. Coastal area मतलब पता है आपको, coastal area means there is a lot of rainfall. Okay, region receive a lot of rainfall and moreover water is salty. वहाँ का वाटर कैसा रहता है, salty. So in generally in this area coconut, sugarcane, rubber, okay, that plants are found in this area. So वहाँ पे adaptations क्या क्या है उसके, generally trees जो रहते वो long रहते हैं. Okay, strong and straight to withstand wind. Trees are generally long, strong and straight. देखो कोकोनट ट्रीज कभी आपने देखा है छोटा कोकोनट ट्री है, नहीं, क्योंकि कोकोनट ट्रीज generally most of the coconut trees found near the coastal areas, so they have a long and strong straight stem. Okay, fruits are a big and have a water in them. फ्रूट्स कैसे रहते इसके, बड़े रहते और उसमें पानी रहता है. एग्जाम्पल कोकोनट, पीते हैं ना आप कोकोनट का पानी, नारियल पानी. So fruits are big and have a water in them, and generally hairy and scaly leaves are found. उसके leaves कैसे रहती है, hairy and scaly. Okay, see next is the plants in a grassland. So these are the region that do not receive sufficient rainfall. वहाँ पे rainfall बहुत ही कम होता है. So they are mostly covered with a grass and a few trees. So these plants have a extensive root system to prevent uprooting by grazing animals. देखो ग्रास लैंड, ग्रास देखिए आपने, ग्रास जनरली दैट ग्रास आर हैव अ नैरो लीव्स एंड दैट प्रिवेंट द वाटर लॉस. उसके लीव्स, उसके रूट्स भी देखो आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहते और स्प्रेड होते जनरली. ओके, बिकॉज इट्स हेल्पफुल टू prevent the water. Okay, plants in a rainforest. Rainforests grow in a hot and wet climate that receive a heavy rainfall. Generally the climate is the hot and wet, so variety of plants are found in the rainforest. So number of the plants are found in the rainforest areas. They have a generally tall trees with a thick crown. Okay, and their short, generally their trees are short and climbers. जैसे कि जंगल में रहता है ना, ओके, शॉर्ट ब्रूसेस ट्रीज रहते, क्लाइंबर्स रहते, so that grow in the rainforest and are evergreen in nature. Okay, so you understood that parts. Today we discuss about the adaptation in plants and generally
discuss the terrestrial plant. Okay, so in the next period we start the new topic is the aquatic plants. So what you do now, you read the lesson up to that point, plants in rainforest carefully, read their adaptation also.